अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो मेरा क्लास है वो क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक है टेल ऑफ टू बर्ड्स। पेज नंबर 106 पे आज हमें करनी है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू स्ट्रेंजर? इसका आंसर लिखेंगे। आंसर, द सेकंड बर्ड सेड, द सेकंड बर्ड said, the second bird said, welcome, welcome, welcome to the ashram, welcome to the ashram, welcome to the, welcome to the ashram, please come inside, please come inside, inside and rest, and rest. इसका मैंने आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का। द सेकंड बर्ड सेड, वेलकम टू द आश्रम, प्लीज कम इनसाइड एंड रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव? आंसर लिखेंगे इसका। द ऋषि एक्सप्लेन्ड, द ऋषि, और ऐसा है द ऋषि एक्सप्लेन्ड, द ऋषि एक्सप्लेन्ड, द ऋषि एक्सप्लेन्ड the bird's behavior, the bird's behavior, explain the bird's behavior, that one is known, that one is known by the company one keeps, by the company one keeps. So answer है, the Rishi explained the bird's behavior that one is known by the company one keeps. Question 6. ये multiple choice question है. Question 6. Which one of the following statements sums up the best story best? Number 1 है, a bird in hand is worth two in a bush. Number 2 है, one is known by the company one keeps. One is known by the company one keeps. A friend in need is a friend indeed. इसका जो 3 में से जो correct answer है वो है number 2. One is known by the company one keeps. Number 2. One is known by the company one keeps. One keeps sums up the story best. Keeps sums up the story. Story best. Sums up the story best. इसके नीचे लैंग्वेज वर्क. लैंग्वेज वर्क में क्या है? fill in the blanks with appropriate words. ऊपर दिए गए हैं 4-5 words. Landed, amazed, hit, flew, surprises. Number 1, the strong wind dashed the birds away deep into the forest. इसमें आएगा flew, F-L-E-W. जो पहले fill in the blank इसमें आएगा flew, F-L-E-W. F-L-E-W, flew. नंबर 2 में क्या है? One of the birds dashed outside a Rishi's ashram. Landed. Number 3. Landed. Number 3 क्या है? The king seemed amazed. The king seemed dashed to hear a similar voice again. Amazed. A-M-A-Z-E-D. Amazed. Number 4. The heavy branch dashed the nest and killed the bird. Hit the nest. Number 5. Life is full of dashes. Life is full of surprises.
S-U-P-E-R-S-I-S-E-S. Surprises. S-U-P-R-I-P-R-I-P-R-I-P-R-I-S-E-S. S-U-P-R. S-U-P. S-U-P-R-I-S-E-S. P-R-I-S-E-S. Surprise. इसी के साथ ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये हमने कंप्लीट किए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज वर्क है. लैंग्वेज वर्क. इसी के साथ ही हमने जो एक आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है. मैं एक बार फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 आंसर. द सेकंड bird said, "Welcome to the ashram. Please come inside and rest." Question 5. The rishi explained the bird's behavior that one is known by the company one keeps. Question number 6 है multiple choice. इसमें जो correct answer है वो है one is known by the company one keeps. Sums up the story best. Language work में क्या है? The strong wind flew the birds away deep into the forest. One of the birds landed outside the rishi's ashram. The king seemed amazed to hear a similar voice again. The heavy branch reached the nest, hit the nest and killed the bird. Life is full of surprises.